Bismillahirrahmanirrahim. This is the last topic, Introduction to Organic Chemistry, Chem 100 from the main course contents. And a little bit information is left regarding the periodic table because we have already discussed the periodic table. So that would be the last lecture I will upload. Now this is lecture number 23, and lecture number 24 is about the alkanes, 25 about the alkenes, and 26 about the alkynes. Now there are 4 lectures which right now I'm going to upload, and this lecture is I'm recording right now, but the lectures for alkanes, alkenes and alkynes I have recorded for the spring students. So if any instructions in the end of the lecture was given, so that is exclusively for the spring students, that is not for you. Okay, so I have no time left to record again, uh, so that's why I'm just posting the YouTube links on the Moodle, and you can open the link and understand what is meant by alkanes, alkenes and alkynes. Now let's start this first thing, that is the organic chemistry. First you need to understand what is meant by organic chemistry. So organic chemistry is basically the study of chemistry of carbon compounds. Now one question which might comes into your mind, that is why carbon is singled out. We have a separate branch for this to study this compound. The answer is, or the reason is, that carbon has a chemical diversity. Okay, and the basic of organic chemistry is carbon. So organic molecules can be large, can be small, okay, and they comprise the structural components of living organisms. For example, carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids. These are all carbon-based compounds. So organic chemistry is very important because it is the study of life and all of the chemical reactions which are related to the life. So common organic compounds may have different classes are there. For example, in the upcoming slides, I will explain to you about the classes. And the common classes are acid anhydrides, acyl halides, alcohols, aldehydes, ketones, alkenes, alkanes, alkynes, amides, amines, and aromatic compounds. So if we go to the next slide, that will explain us the classification of organic compounds. So if we go to the classification of the organic compounds, so there are, this is the organic compound, okay? It is broadly categorized or divided into 2 main compounds. One is the open chain, like chain-like structures, and one is the cyclic structures. So broadly, organic compounds are classified into 2 main categories: open chain compounds and cyclic compounds. Now, open chain compounds further divided into 2 types. Number 1 is the straight chain compounds or the branched chain compounds. If we come to the cyclic compounds, so they are also broadly categorized into types. One is the homocyclic compounds, and number 2 is the heterocyclic compounds. Homocyclic compounds mean all the carbons which are involved in the cyclic compound, they are carbon. And heterocyclic compounds means a cyclic structure hai, but one of the carbon is replaced by the heteroatoms. Now, what are the heteroatoms in organic compounds? They are most probably nitrogen, oxygen, सल्फर, हेलोजन. हेलोजन का जो एब्रीविएशन है वो एक्स है, वेयर एक्स इज इक्वल टू क्लोरो, ब्रोमो, फ्रोमो, आयोडो, क्लोरो आयोडो. और nitrogen, oxygen, sulfur, halogen. So majority, when one of these heteroatom is present in the cyclic structure, the class compounds, they are known as heterocyclic compounds.
Now homocyclic compounds जो है, these are further subdivided into two main categories. Number one is the alicyclic compounds and number two is the aromatic compounds. अच्छा, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक का आपको अंडरस्टैंड करना है कि एरोमेटिक में ये एक रिंग इन्वॉल्व होता है जिसे कि हम कहते हैं बेंजीन रिंग. द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. ओके, ये क्लोज्ड सर्कल होता है ऑफ 6 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन्स. राइट, ये एक हाइड्रोजन है. ओके, दिस इज द सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन. This is fourth hydrogen. This is fifth hydrogen. And this is sixth one. Okay. So it has 3 double bonds which are alternative. One double bond, one single bond, one double bond, one single bond, one double bond, one single bond. So if the structure is like this, on the whole we can write the structure like this. This is the aromatic. Whenever this structure is present, तो हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है. इसके अदर रूल्स हैं which I'm not going to explain over here. बस ये रिंग अगर किसी जगह पे मौजूद है तो हम कहते हैं कि एरोमेटिक है, और अगर रिंग मौजूद नहीं है then we said that this is the alicyclic compounds. Now we come to the bondings. तो bondings जो हैं वो बड़ी concluded bondings हैं यहाँ पर. राइट, हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाती है, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाती है और कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाती है. ये इनका दिस इज द कैलकुलेटेड कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. हाइड्रोजन मेक्स 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन मेक्स 2 बॉन्ड्स. व्हेन ऑक्सीजन इज देयर, so whenever it is connected to carbon it is always in the double bond. So नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाती है लेकिन अलग अलग, दो उसमें डबल, एक 1 डबल और 1 सिंगल. So total bonds जो नाइट्रोजन बनाएगी कार्बन के साथ that would be 3. ओके, एंड कार्बन जो है वो itself 4 बनाती है. अब हमें इसकी डिटेल तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में we do not require over here because this is just the introduction. लेकिन I'm interested, why I am interested in oxygen and nitrogen, because these sometimes present in the organic compounds in the infrastructure, in the cyclic structure as an heteroatom. I'm more concerned about the carbon. So carbon जो है it can make 4 bonds. 4 bonds ये बनाती है, right? So carbon can make 4 bonds. अच्छा, जब ये 4 bonds बना लेती है किसी के साथ शेयरिंग करके, फॉर एग्जांपल 4 हाइड्रोजन्स के साथ ये शेयरिंग कर लेगी, 4 हाइड्रोजन्स के साथ शेयरिंग हो गई, राइट? तो फॉर 1 मोमेंट इसमें कार्बन कितने कंट्रीब्यूट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 एंड 4. ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी से ले नहीं सकती. इट कैन नॉट गिव द 4 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एक्सेप्ट द 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट प्रेफर टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. जो आपकी हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो शेयर कर रहे हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, राइट? सो टोटल इफ यू सी कि फॉर सम मोमेंट किसी ना किसी तरह से इस हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है. और अगर हम ब्रॉडली इसको राउंड अबाउट कर लें तो कार्बन के में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. तो दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द कार्बन एंड इट्स 4 बॉन्ड्स. Now we do not dive deeply into the depth of the bondings. We need to understand just the basis of introduction of the chemistry. The study of carbon, the compounds it makes and the reaction it undergoes. 16 million carbon compounds so far we know, and चूँकि इनकी सिंगल टू सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी होती है और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, दैट्स वाई जितने भी कार्बन
कंपाउंड्स होते हैं, दे आर स्टेबल एंड दे कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन्स, ठीक है। दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रेट चेन्स। ये आ जाएंगे आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आ गए आपके ब्रांच स्ट्रक्चर्स आ गए, ठीक है। इट डिपेंड्स के कैसा है। होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स। अच्छा, to understand this terminology, first of all, we need to understand the functional groups. तो हम कहते हैं कि related compounds that have the same functional groups, उन्हें हम homologous series कहते हैं. So before diving into the homologous series, you need to understand what is meant by the functional group. Functional group is actually the reactive site of any carbon compound. ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं विच इज फाउंड विद इन द मॉलिक्यूल्स। कोई एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। एंड एक्चुअली दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस एंड देयर presence is the characteristics of their class. For example, this is the functional group hydroxyl group. This is known as hydroxyl group and it is OH. When this hydroxyl group is present in any as a functional group in any class of compounds, the class is known as alcohols. Now structure wise हम इसको लिखते हैं यहाँ पर like this. इसमें OH जो है that is the reactive site. This is known as the functional groups. और R की जो value है वो when I will go to the alkanes I will explain you कि ये R variable है, इसमें R की value change भी हो सकती है, right? 1 carbon भी हो सकता है and और more than 1 carbon भी value हो सकती है। और जब हमने यहाँ पर R की value जो है वो put कर दी है this one, अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखें थोड़ा सा तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी CH3, ठीक है। वैल्यू इज CH3 and the second is CH2, ठीक है। CH2। सो ये वैल्यू अगर आप कंडेंस फॉर्म में लिखें तो C ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये वैल्यू आपकी R की यहाँ पे क्या आ गई? R इज इक्वल टू CH3CH2, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये चेंज होती रहेगी। तो आपकी जो एग्जांपल है वो एथेनॉल है। नेक्स्ट कम टू कार्बोनिल ग्रुप विच इज COCHO. When this group is present, class is known as aldehydes. और ये आपका ये ग्रुप मैंने प्लेस कर दिया है और R की वैल्यू आप कुछ भी लगा लें। अगर H है CHO तो ये aldehydes हैं। यहाँ अगर R की वैल्यू if I have used the value of R as CH3, so compound is known as acetaldehyde. Next we come to this CO. When CO is present, it is known as ketones and this is the CO, ठीक है। इसके right side में एक R और एक R इसके left side में. So we can put different values. For example, on here I have put CH3 over here and CH3 over here. Now basically this is CH3 COCH3, तो इसको हम कहते हैं एसीटोन। एग्जाम्पल आ जाएगी एसीटोन। Now in this slide I will explain to you the different classes and their reactive sites. So let's move to this thing. Okay, so this is first compound. इसमें जो blue part है that is the functional site. So functional site is XOCX. When this functional site is present along with one R, the group class is known as acyl halides, where the value of X is equal to chloro-chloro-bromo-iodo. Next जो है आपका blue structure OH, class is known as alcohols. नेक्स्ट आ जाता है आपका aldehydes. ये आपकी कार्बन क्यों ब्लू में दी गई है? बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू द फंक्शनल साइट, सो इस वजह से ब्लू में इसको भी दिया गया है। सो ये पूरा जो आपका CH
ग्रुप जो प्रेजेंट है CHO एल्डिहाइड्स। अब यही CX, if CX is present, the compound with 3 R's, it is called alkyl halides, where the value of X is fluoro, chloro, bromo, iodo. Now there is the triple bond between two carbons. The class is known as alkynes. Here the double bond is present between two carbons. तो ये functional sites हैं, इनकी reactive sites हैं. Whenever the reaction is going to take place, this part will act. Okay, rest of the molecules will not participate in any kind of reactions. They have other implications and pressures, but not in the chemical reactions. So this is called alkenes. अब जब आपने एक नाइट्रोजन बीच में कर दी है और इर्द गिर्द आपके आर ग्रुप है, द क्लास इज नोन एज अमीन्स। अब इस नाइट्रोजन के साथ फर्दर आपने CO को इंस्टॉल कर दिया है, तो क्लास इज नोन एज अमाइड्स। एरोमेटिक रिंग आ गया है, ये रिंग आ गया है, तो ये आ गया आर, एरोमेटिक रिंग्स। और अगर आपने इसके ऊपर आर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो आपकी क्लास कहलाएगी टोलुईन। ठीक है, फिर आपके पास है कि इसमें अगर आप X लगा देंगे तो एरल हेलाइड्स क्लास होगी, वहाँ X की वैल्यू वही है। अब आपने क्या किया है कि अब आपने ये पूरा ग्रुप ऐड किया है, यानी कि CO और OH इकट्ठा आपने ऐड किया है, तो क्लास इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 2 सल्फर, ठीक है, 1 combined with carbon over here and 1 sulfur is connected to carbon of this area. So this is the entire reactive site, ठीक है, of the compound, and this class is known as disulfides. If 2 oxygens are involved, ये आ गई आपकी 2 oxygens और 2 carbon, तो class is known as esters. If 2 carbons are connected via oxygen, the class is known as ethers. If 2 alkyl carbon is connected to nitrogen, क्लास इज नोन एज, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो अमीन्स है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो क्लास इज नोन एज अमाइन्स। ये आ गया आपका CO, आपने ये एक CH3 ये लगा दिया, बड़ा ग्रुप दूसरा लगा दिया, देयर इज नो हाइड्रोजन्स, तो ये आ गया आपकी कीटोन्स। जब R आपका कनेक्टेड हो गया CN ग्रुप के साथ, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो क्लास इज नोन एज नाइट्राइल्स। जब R is connected to NO2 group, तो compounds they are known as nitro groups। और यही अगर R के साथ ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप आए, ये आपका होता है सब जितना भी आपका न्यूक्लिक एसिड्स में यूज होता है, और ATP एडिनोट्रीन ट्राइफ और जो आप एनर्जी रिलीज करते हैं सारे, वो ये फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, ये दीज आर नोन एज फॉस्फेट एस्टर्स। अब आपका ये S के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं, हेटेरो एटम आ गया, ठीक है, तो क्लास आपकी कहलाएगी थायोईथर्स and this is thiols. So this is all about the different functional groups and things. Now we come to the structure. अगर हम देखें तो जो first carbon जो है, ठीक है, it has 4 hydrogens. Remember कि carbon has always has, whether it is written or not written, carbon has 4 hydrogens, ठीक है। So इसका number we will use the general formula, ठीक है, तो इनका नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। अब हमारे पास ऑर्गेनिक की जो मेन क्लास है, दिस इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इज इन योर कोर्स। उसमें 3 हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। एक आती है एल्केन्स, ठीक है, वन इज नोन एज एल्केन्स, जिसकी लेदर स्लाइड में साथ अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी क्लास आ जाती है एल्कीन, second class is known as alkene, right, and the third class is alkyne. Now what's the difference? The difference is in alkane, alkene and alkyne is the way why we pronounce it, we read it, okay, alkyne। अच्छा, अब आपने ये चीज इसमें करनी है कि जो एन लफ्ज हो, when एन is there, इसका मतलब है कि तमाम बॉन्ड्स जो स्ट्रक्चर्स में है वो सिंगल हैं। अगर इन वर्ड इज यूज हो रहा है, साउंड एंड्स एट इन, इट मींस कि
there must be at least one double bond in the structure. And if "ein" sound is used, it means that there must be at least one triple bond. So alkane represents the single bonded structure, alkenes double bonded structures, and alkynes जो हैं they represent the triple bond structures. Triple bond किसके? कार्बन के. अगर carbon to carbon all bonds are single, we call them alkanes. If carbon to carbon there must be at least one bond double, so we call it alkene. और अगर carbon to carbon there must be at least one bond which is triple, ठीक है. और ये अब एक क्वेश्चन भी था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिंगल बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड इन 2 डबल बॉन्ड? तो हम कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल बॉन्ड? 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर हम नेक्स्ट पे जब हम कार्बन को चेंज कर रहे हैं नंबर कार्बन का, C से हम जा रहे हैं C2 पे, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन्स भी 6 हो गई हैं. नेक्स्ट में आप जाएं तो दिस इज C3, हाइड्रोजन्स जो हैं वो 8 हो रही हैं. अगर आप नेक्स्ट पे जाएं C4 तो हाइड्रोजन्स जो हैं वो 10 हो जाएंगी. नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेंबर इट. ओके, हाउ टू रिमेंबर इट. लेट मी सी इफ आई हैव द जनरल. नो, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला ओवर हियर. ठीक है, सो हमारे लिए एक जनरल फॉर्मूला है इसका. ये आ जाता है इसका जनरल फॉर्मूला CN, ठीक है, H2N प्लस N. ये फॉर्मूला आ जाता है फॉर एल्केन्स. किसका फॉर्मूला है ये? एल्केन्स का फॉर्मूला है जनरल. वी यूज दिस फॉर्मूला and then we can calculate the number of carbons as well as the total number of hydrogens. So ये आ गया आपका alkanes. Right? Next आ जाता है CnH2n. ये जनरल फॉर्मूला है फॉर alkenes. ये किसका आ गया? alkenes का. Next we come to general formula CnH2n minus N. This is the general formula for alkynes. Okay. So इसकी एग्जाम्पल जो है वो मैं नेक्स्ट में करती हूँ क्योंकि ये स्लाइड्स जो हैं वो 16 है. लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो मैं यहाँ पर आके इस 8 स्लाइड पे इसको स्टॉप कर रही हूँ और इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. सेकंड पार्ट इसका जो है उसको मैं लिखूंगी पार्ट A. ठीक है, 23rd लेक्चर पार्ट A. देन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम बीइंग.